A very good evening to everybody. 10 o'clock, IELTS time, more tips. Today we're going to talk about writing the body of an essay, and slowly and gradually we are going to build it up. Wishing you all a very good evening. So let us start our work. Okay. So today we are going to do two things. First of all, we have to complete something called a writing introduction. And I have to complete the hook line here, hook line. I have to teach you what is a hook line. And then in writing the body of the essay, we will do a discussion type of an essay. So I'll spend some time on explaining the hook because it, cannot justify to have the full time of the lecture. I cannot justify कि hook line पे मैं पूरा lecture गुजार दूं. It doesn't make sense. So in writing the body of an essay, I will be covering discussion essay only, just a discussion essay, okay? Because I understand that writing the essay is a very difficult thing. So I'm going very slowly, ताकि आराम से हम हर चीज को complete कर लें. And I don't want to hush up things. I don't want to rush things very fast, so that आपको समझ ही कुछ ना आए, तो फायदा कुछ नहीं होगा. Today my lecture will just be based on discuss both the views and give your opinion. So that is what I'm going to discuss. I'll give you some lines also. I'll solve one thing for you. So we'll fix up everything together. Don't worry. And make it sure that you write a lot, you type a lot. Because if you do not type, I will never come to know you're writing it right or writing it wrong. Okay, it's very important for you to write down. So before I start, I'll just wish everybody. Vaibhav Arora, wishing you very good evening. Jasdeep Kaur, very good evening. Gurjas Kaur, very good evening. And Gurvinder Singh, very good evening to you too. Start करते हैं जी आज का lecture. So, if you haven't followed us on social media, please subscribe to our channel, Webberz Educomplimited. इस चैनल पे रोज रात को 10 बजे IELTS के टिप्स आते हैं. 10 o'clock. 10 p.m. there are tips of IELTS every day. Something or the other I keep telling you all the time. We have this wonderful blog called webberz.in/blog. इस पे बहुत चीजें हैं. I keep on taking it to you all the time. Very useful. Do see it. On Instagram, follow us on webberz.in. And this is our WhatsApp number. In case you are not a Webberz student and you want admission, you can just message on this number for online also. For online admissions and for offline admissions, you can simply message them and they will help you out. If you want any books, if you have any complaints, if you have any suggestions, anything if you have, just write to them and they will help you out with everything. I have a team of people who are looking into this. पूरी टीम है हमारे पास 10 बंदों की जो खाली ये देखती है, ये व्हाट्सएप नंबर इसके सारे कंप्यूटर्स पे लगे हुए हैं, इनको चेक करती रहती है क्या मैसेजेस आए हैं, क्या हो रहा है. ओके, नाउ राइटिंग ओवरव्यू. तो मैं रिकैप भी करूंगा जो पिछले 2 लेक्चर्स में मैंने करवाया आपको, टास्क 1 and task 2. The lecture is going to be in 2 languages. One is going to be Hindi and the second is going to be English. Okay. Because it will be better for you if I keep on talking in English and Hindi combined. You'll understand also and increase your vocabulary also. You can practice your listening skills as well. So task 1 is for 3 bands and task 2 is for 6 bands. Make it sure that you always do the essay first, always, because it has got more weightage. Make it sure you do it first. Parts of the essay solution. There are 3 parts of essay: introduction, body and conclusion. पिछले 2 lectures में मैंने introduction करवाई है. Introduction में 3 parts होते हैं basically. One is called H. H stands for hook line. Second is called P. P stands for paraphrase. And T stands for thesis. मैंने पैराफ्रेज एंड थीसिस की पूरे लेक्चर ले लिए हुए हैं, पूरे 1-1 घंटा लगा के वी हैव डिस्कस्ड दीज बोथ लेक्चर्स. अगर आपने इनके लेक्चर सुनने हैं तो प्लीज मेरे जो हमारा चैनल है उसी पे जाके चेक कर लीजिए.
पैराफ्रेज का लेक्चर होगा, थीसिस का लेक्चर होगा. You can just click them, watch them. They are very useful lectures. If I talk about the body, that we'll do it in due course of time. आज मैंने बॉडी का एक टाइप लूंगा यहाँ पे, डिस्कशन काइंड ऑफ एन एसे. कल भी करेंगे, परसों भी करेंगे, ताकि बॉडी कंप्लीट हो जाए, फिर कंक्लूजन पे जाएंगे, कंक्लूजन कंप्लीट हो जाए. देखिए, ऐसे लिखना इज नॉट एन इजी जॉब. इफ यू टेल मी, मैनी पीपल वर टेलिंग मी यस्टरडे, बहुत लोग मेरे को कल बोल रहे थे कि सर आप एक ही दिन में पूरा ऐसे करवा दो, पूरा का पूरा ऐसे करवा दो. भाई मैं करवा तो दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं करवाने में, प्रॉब्लम आपको आएगी समझने में. अगर आप लोगों को समझ नहीं आएगी तो मैंने ऐसे करवा के क्या करना है. कोई देखो, इसमें मेरी ईगो तो है नहीं कि मैंने एक दिन में सारा का सारा ऐसे करवा देना. मैंने तो ये भी सुना हुआ है कि लोग 10 घंटे में आइल्स करवा देते हैं पूरी. सवाल ये आता है, आपने आइल्स 10 घंटे के करने के बाद नंबर आ गए कि नहीं आए? जो मैं कल से देख रहा हूं यहाँ पे, जो एसेज आप लिख रहे हैं, जो आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, उसको ठीक करने के लिए हमें टाइम चाहिए. एंड डोंट इवन थिंक दैट रोम वाज बिल्ट इन अ डे. इफ यू थिंक रोम वाज बिल्ट इन अ डे, यू आर टोटली रॉन्ग. And we cannot build up your essay in one day, all the 7 types of essays in one day, all the different kinds of topics in one day. It is not possible. Try to understand that. Many people commented on this yesterday कि भाई सर आप बहुत स्लो करवा रहे हैं, आप फास्ट करवाइए. करवा देता हूँ फास्ट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. समझ नहीं आएगा मेरे पास मत आना, because my speed is going to remain this only. रादर मैं अभी भी आपको बताऊं तो आई एम गोइंग फास्ट. टुडे आई शुड बी हैंडलिंग ओनली वन थिंग, दैट इज हुक लाइन और डिस्कशन एसे. बट फिर भी मैं दोनों चीजें हैंडल इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज आई गॉट अ लॉट ऑफ फीडबैक फ्रॉम द ब्रांचेस टुडे कि सर आप बहुत ज्यादा स्लो करवा रहे हैं, लोग कह रहे हैं हमें फास्ट करना है, फास्ट करना है. मेरे पास कोई फास्ट फॉरवर्ड की दवाई नहीं है. ये मेंटल बिल्डअप है. ये कोई इंजेक्शन तो है नहीं कि मैं आपको बाजू पे इंजेक्शन लगा दूं और आपको ऐसे लिखना आ जाएगा. इट इज नॉट पॉसिबल. बहुत लोग ऑन इंटरनेट दे कीप टेलिंग हमारे टेम्पलेट्स ले लो, टेम्पलेट्स लिख कैसे लगा दो. लगा दो, 5.5 से ऊपर नंबर आएंगे तो मुझे बताना. फिर भागते हुए आओगे मेरे पास, सिर्फ 5.5 से 6 चाहिए हमें. नहीं आते, टेम्पलेट से नहीं आते. टेम्पलेट्स दे सकते हैं हम. अगर आपका बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर गलत है, टेम्पलेट का क्या करोगे? कुछ भी नहीं हो सकता उस समय. पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक करो, ऐसे लिखना ठीक करो, उसके बाद टेम्पलेट्स यूज करो. टेम्पलेट्स करो यूज, मैं मना नहीं करता हूं, मैं नहीं मना करता हूं कि टेम्पलेट्स मत यूज करो, ऐसे यूज देम. But first understand the concept of the essay, then use templates. Just don't use templates blindly. If you use templates blindly, you cannot do it. It's not possible. Okay. Now, word limit should be 250 to 280 words. That is very important. Keep that in mind. If you write more words, you will not get extra points. That's for sure. Okay. Next thing, essay introduction. बिफोर राइटिंग द इंट्रोडक्शन हमें 3-4 चीजें ध्यान में रखनी होती हैं. स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ें, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लें. सेंट्रल आइडिया अंडरस्टैंड करें क्या है. मेक अ प्लान ऑफ द एक्शन. ओवरव्यू लुकिंग इनटू द टास्क. अब मैं आपको एचपीटी सिखाने वाला हूं. मैंने अभी तक पीटी सिखाया था. पिछले 2 लेक्चर्स में हम सिर्फ पीटी के बारे में बात कर रहे थे. पीएनटी. पीएनटी का मतलब है पैराफ्रेज एंड थीसिस. आज मैं बात करूंगा एचपीटी की. एच का मतलब है हुक. This is the hook line, P for paraphrase and T for thesis. Now, this kind of an introduction is going to be a little bigger than the previous kind of introduction. Okay, so I'll teach you what is this kind of introduction, how does it work. एक पैरा है 30 से 50 वर्ड का using HPT strategy. But अगर आप HPT strategy use करोगे, the length of this introduction can go up to 80 words. Can go up to 80 words. देखिए, ये ना बहुत ध्यान से यूज करनी पड़ती है एचपीटी स्ट्रैटेजी. सपोज करो एक ऐसे आ गया जिसके बारे में आपको कोई पॉइंट्स नहीं है, बट यू हैव टू राइट 250 वर्ड्स. देन आई विल यूज एचपीटी स्ट्रैटेजी ताकि मेरी इंट्रोडक्शन थोड़ी लंबी हो जाए. आफ्टर दैट आई स्टार्ट राइटिंग द बॉडी बिकॉज आई डोंट हैव टू मेनी पॉइंट्स इन द बॉडी. इन दैट केस माई एचपीटी विल बिकम स्ट्रॉन्गर. इन दैट केस ओनली. वरना एचपीटी लिखने की कोई जरूरत नहीं है. यू आर प्लेइंग विद फायर. डोंट डू एचपीटी. Do only PT. That is much better. It is much easy to write. क्यों easy है? I'll come to that point. Once you understand the lecture, you learn why is it easy to do PT than HPT. Hook line होती क्या है? An essay hook is 1 or 2 sentences of your paper. ये क्या होता है?
दे सर्व टू कैप्चर द रीडर्स अटेंशन। हमारे केस में एग्जामिनर है, उसकी अटेंशन कैप्चर करने के लिए हम ये लाइन लिखते हैं, एंड टू हेल्प देम डिसाइड इफ दे वांट टू कंटिन्यू रीडिंग योर टेक्स्ट और नॉट। हमारे केस में ये नहीं होगा, उसे पढ़ना ही पड़ेगा हमारा पूरा ऐसे, क्योंकि हमने पैसे दिए हुए हैं ऐसे पढ़ाने के लिए, राइट। नेक्स्ट, वंस यू हुक द रीडर्स बी श्योर टू इंट्रोड्यूस योर एसे टॉपिक एंड थीसिस। उसके बाद कहता है ये कि आप पैराफ्रेजिंग कीजिए एंड थीसिस लिखिए, ठीक है। ऐसे हुक होता क्या है, ऐसे हुक को अंडरस्टैंड करते हैं। व्हाट इज अ हुक? Hook is a very strong sentence to capture the reader's attention. That is it. Okay. पैराफ्रेज का मतलब मैंने पिछले लेक्चर्स में समझाया आपको, मैं फिर से एक रिकैप दे देता हूं। पैराफ्रेज का मतलब है किसी और के आइडियाज को अपने शब्दों में लिखना। That is called as paraphrasing. What is the meaning of thesis statement? Thesis statement का मतलब है what is your viewpoint on the whole issue. आपके ऊपर आपका व्यू पॉइंट क्या है सारे इशू के ऊपर, आपकी जजमेंट क्या है, आपका ओपिनियन क्या है, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है सारे के सारे टॉपिक के ऊपर। दैट इज कॉल्ड एज अ थीसिस स्टेटमेंट। दैट विल कंट्रोल द होल एसे, कि एसे की शक्ल कैसे बनेगी, दैट डिपेंड्स ऑन द थीसिस स्टेटमेंट। हुक लाइन पे हम फोकस करेंगे। हुक लाइन क्या होती है? लेट अस डेवलप वन हुक लाइन। यही एसे मैंने पिछले 2 लेक्चर्स में भी यूज किया, मैं इसमें भी यूज करने वाला हूं। Computers are being used more and more in education. Some people say that it is a positive trend, while others argue it is leading to negative consequences. Discuss both sides of this argument and then give your opinion. तो इसको मैंने हुक लाइन से किया है। ये लाइंस हम लोग पहले कर चुके हैं। ये वाली लाइन जो मैंने रेड कलर से मार्क करी है यहाँ पे, you people have done this in case you have attended my previous 2 lectures. Now this is the line that is called as hook line. Hook line है क्या देखते हैं। Technology is born with the accomplishment of scientific progress and breakthroughs. अब ये लाइन अगर मेरे को कोई बोले कि भाई मुझे एग्जामिनेशन हॉल में याद आ जाएगी, तो मुझे ये याद आने वाली लाइन नहीं है। That is for sure. It is impossible that I can remember such line. Now let us talk about some very genuine problems with the HPT. There are many types of essays, many types. You really don't know what kind of an essay is going to come to you. How many hook lines will you remember? You can paraphrase easily. Uska मैं formula आपको दे चुका हूं. You can write thesis easily. I have given you the formula for that also. But how many hook lines are you going to remember? On the spot, if I tell you to remember a hook line, it is very difficult for you to remember a hook line. So what we do not write a hook line. That is for sure. अगर याद आ जाए तो बहुत खुशी की बात है, अगर ना याद आए, there is no compulsion to write a hook line. So my suggestion is always this, that please do not force yourself to write a hook line. If you force yourself to write a hook line, the things will go out of hand. एक और करके देखते हैं। देखिए, एक हुक लाइन लिखने से मेरे 17 वर्ड्स एक्स्ट्रा हो गए। अब मैं हुक लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करके देखता हूं, ठीक है। हुक लाइन को मैंने ये लिखा यहां पे, जो रेड कलर का है वो मेरा पैराफ्रेज है, ये वाला। जो ब्लू कलर का है वो मेरा थीसिस है। मैं इसको मार्क कर देता हूं सारे, क्या क्या है ये। हुक लाइन, पैराफ्रेज एंड थीसिस मैंने मार्क कर दिए सारे, और ये मैंने एक्सटेंशन कर दी है, ठीक है। जैसे आपने बॉडी के 2 पॉइंट्स ऊपर लिख दिए हैं, मैंने पहले भी समझाया आपको थीसिस में। मेरा पिछला लेक्चर खोल के देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हम लोग बॉडी के पॉइंट्स को इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। एंड एग्जामिनर बहुत खुश होता है पढ़ के, कहता है मेरे को समझ आ रही है पूरी। अब देखो, इसके 78 वर्ड्स हो गए। जैसे मैंने प्रिडिक्ट किया था आपको कि 80 वर्ड्स तक हमारा इंट्रोडक्शन चला जाएगा अगर हम हुक लाइन लिखेंगे। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि हुक लाइन की प्रॉब्लम्स क्या आ सकती हैं। हुक लाइन्स की प्रॉब्लम ये आती है कि हमें याद नहीं होता। हम सबके मन में गलत धारणा है, वी हैव अ मिसकंसेप्शन इन आवर माइंड अबाउट द हुक लाइन। इट गेट्स मोर बैंड्स। Everybody thinks that if I write a hook line, I'm going to get more bands. It is very wrong. It is very, very wrong. Why is it wrong? It is not marked. Hook line is not marked because it is not connected to the topic, main topic. It is not connected. So it is not marked. All right. So if you want to write it down to extend the number of words, that's all right.
But if you don't need to extend the number of words, then it is not a wise idea to write a hook line. मैं फिर से रिपीट करता हूं, अगर आपको अपने एसे के वर्ड बढ़ाने हैं, ज्यादा करने हैं, तो हुक लाइन डाल लीजिए. बट अगर आपको पक्का है कि मेरे एसे के वर्ड्स पूरे 250, 260, 270 हो जाएंगे, skip the hook line. Skip it. It is not marked. Do not waste your time on the hook line. You will waste a lot of time and it is not marked. So you understand my point. When to use a hook line and when not to use a hook line. Ideas हैं, मत use करो. Ideas नहीं हैं, use कर लो. Simple. Okay? But इसकी marking नहीं होती. ये बात को याद रख लेना. ये खाली शब्दों को पूरा करने के लिए ही होती है, इसकी मार्किंग नहीं होती. Okay? So I will now proceed on to writing essay body. So this is the very, very important part of essay body. I am going to teach you how to write an essay body. Before I start writing down the essay body, I have a lot of messages. I'm going to read it out for you. So we have Tarunpreet Singh, a very good evening to you. Amolak Singh, a very good evening to you. Udaybir Singh, very good evening to you. And Priya, very good evening to you too. So everybody should be ready now to participate in this essay, writing a body of the essay. Okay, I will teach you, don't worry, it won't be much of a problem. I'll give you some sentences also, you can write them. Now, essay का formula. मैंने अभी तक कंक्लूजन का फॉर्मूला नहीं बताया आपको. मैं कंक्लूजन का फॉर्मूला भी नहीं बताऊंगा. जब कंक्लूजन में जाऊंगा तब बताऊंगा. My introduction should be PT, paraphrase and thesis. My body should be MSEW. Now, what is MSEW? Wait, I'll tell you. Hold on. Now, what is the body of the essay? पहले हम ना instructions को समझते हैं. In an IELTS exam, these instructions are given to you. These instructions are given to you. You have to follow these instructions. Instructions में लिखा है give reasons for your answer. And का मतलब है करना है. Include relevant examples. Relevant examples include करने हैं. ये plural है. Examples. So अगर मैं इसे break down करूं, तो ये कहता है मेरे को अपना आंसर देना है. तो मैंने अपना आंसर इंट्रोडक्शन में लिख दिया in the form of thesis. तो थीसिस की इंपॉर्टेंस आपको समझ आ गई कि थीसिस में आपका आंसर आ गया और यही आंसर मेरा कंक्लूजन में भी आ जाएगा आंसर. तो मेरा आंसर हो गया क्लियर. तो मेरा ये आंसर निकलाया. अब आ गया गिव रीजंस. रीजंस कहां देनी है? मेरे को बॉडी में रीजंस देनी है. आई हैव टू गिव रीजंस कि मैंने ऊपर वाला आंसर क्यों बोला. तो रीजंस का भी क्लियर हो गया. एंड इंक्लूड रेलेवेंट एग्जाम्पल्स. रीजंस के साथ में मैंने इंक्लूड करने हैं एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल्स. रीजंस एंड एग्जाम्पल्स इंक्लूड करने. एग्जाम्पल किस प्रकार के हों? एग्जाम्पल होंगे फ्रॉम योर नॉलेज और एक्सपीरियंस. दो तरह के एग्जाम्पल्स होंगे, फ्रॉम योर नॉलेज और फ्रॉम योर एक्सपीरियंस. दीज आर टू एग्जाम्पल्स व्हिच आर गोइंग टू बी देयर. क्लियर? ओके. सो let us talk about essay body. सबसे पहले जैसे आपने ओवरव्यू दिया है, थीसिस दिया है, वैसे आपने बॉडी को डिजाइन करना है. फॉलो द प्रॉपर फॉर्मेट ऑफ द काइंड ऑफ एन essay. फॉलो कीजिए फॉर्मेट को. पुट 1 or 2 supporting arguments and example in one para. Use connectors to connect 2 points, which is very important. If you don't use connectors, पॉसिबिलिटी बड़ी कम होती है आपका ऐसे प्रॉपर फॉर्मेट लेगा, प्रॉपर शक्ल लेगा. आगे चलते हैं. बॉडी पैरा. बॉडी पैरा में MSEW होता क्या है? सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ MSEW? नाउ M stands for main point, S stands for supporting arguments, E stands for example and W stands for wrap up. Wrap up भी ऑप्शनल है. जरूरी नहीं है कि आप रैप अप करें या ना करें, आपकी श्रद्धा है, कोई इश्यू नहीं है. तो अब हम एक एक पॉइंट को अंडरस्टैंड करते हैं. व्हाट आर द पॉइंट्स फॉर दीज? MSEW फॉर्मेट, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब बात करते हैं हमारे पास कितने वर्ड्स होने चाहिए. इफ यू आर मेकिंग 2 पैराग्राफ्स, जो हर एक ऐसे में होने चाहिए 80 to 100 वर्ड्स पर पैराग्राफ. एंड इफ इट इज 3 पैराग्राफ्स, देन 60 to 70 वर्ड्स पर पैराग्राफ.
Today we will work on discussion essays. We will follow the MSEW और MSC format. इनको हम follow करके अपना essay लिखेंगे. How to start? शुरू कैसे करना है वो देखते हैं. Start your body by giving an idea which relates to the position that you gave in the introduction. सबसे पहले अपनी body को start करने के लिए आप topic sentence लिखिए. Topic sentence, which is very important. Topic sentence का मतलब क्या होता है वो समझते हैं. For example, आपको टॉपिक दिया है A says this while B says this. Discuss both views and give your opinion. तो पहले पैरा में बॉडी में A आएगा, सेकंड पैरा में B आएगा. आपने दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू बताने हैं. ये होता है डिस्कशन ऐसे. ठीक है, इसको शुरू कैसे करना है देखते हैं. इंट्रोडक्शन. ओके, जस्ट ओके, ये मेरा एग्जाम्पल है. तो अब मैं इस एग्जाम्पल के बारे में सारा काम करूंगा और आपको लिखना भी इसी के ऊपर ही सिखाऊंगा. आपने लिखना भी इसी के ऊपर है. सो यू आर गोइंग टू राइट डाउन ऑन दिस. सो लेट अस सी हाउ डज इट वर्क. Some people think that zoos are cruel and should be closed down. अगर मैं इसको हिंदी में पढ़ूं तो लिखा है जू जहां पे हम एनिमल्स को रखते हैं वो क्रूअल है, जालिम है, एंड शुड बी क्लोज्ड डाउन. उनको खत्म कर देना चाहिए. अदर्स यानी कि सम पीपल यहां आ गए तो ये बन गया अदर पीपल. Others, however, believe that zoos can be useful in protecting wild animals. So it says that the zoos which are there can be useful in protecting the wild animals. Fine. So now these are 2 point of views. So it says discuss both views and give your opinion. तो सबसे पहले मैं लिखूंगा इंट्रोडक्शन. मैं क्या करूंगा, पैराफ्रेज करूंगा एंड साथ में अपना ओपिनियन दूंगा क्योंकि इसने मेरे से ओपिनियन मांगा है. मैं थीसिस स्टेटमेंट के बीच में अपना ओपिनियन दे दूंगा. तो मैंने इंट्रोडक्शन लिख के रखी हुई है पहले. ये मैं आपको सिखा चुका हूं. पिछले 2 लेक्चर्स में आप मेरे से इंट्रोडक्शन प्रॉपर सीख चुके हैं. You have learned how to do a PT format of the introduction. And if you have not seen those lectures, I request you to please see my 2 lectures. One is based on paraphrase, the other is based on thesis. Okay? So this is my introduction. So I am going to tell you what I'm going to write in my introduction. So in the introduction, this is my paraphrasing. So I will mark my paraphrasing here. And this is my thesis. So I will mark my thesis here. मैंने 2 parts कर दिए. This is called as paraphrasing. This is called as thesis. There is a section of people who argue that zoos help to preserve wild creatures, while others are against them and say that they are inhumane. Inhumane मतलब cruel and should be shut. Closed की जगह पे word आ गया shut. I believe, ये मेरा point of view आ गया, that animals are kept in poor conditions which take away the right to live freely, make the existence of zoos unacceptable. तो मैंने कहा हाँ जी, zoos को close करना चाहिए. मैं एक साइड पे हो गया कि zoos को close करना चाहिए, बट मैं डिस्कस दोनों ही साइड करूंगा. ठीक है, तो अब मैं चलता हूं बॉडी पैरा में. तो मेरा बॉडी पैरा स्टार्ट करने के लिए मैं आपको कुछ लाइंस दे रहा हूं. ठीक है, ये लाइंस मैं आपको बार बार देता रहूंगा. ये लाइंस आप 3 तरह से बॉडी पैरास को स्टार्ट कर सकते हैं. नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3. और भी बहुत तरीके हैं, बट in this essay that I am going to do with you, we'll start with 3 ways. On the one hand, on the other hand. पहला पैरा बॉडी का, दूसरा पैरा बॉडी का. पहला पैरा बॉडी का हम ये भी लिख सकते हैं, to commence with the first notion, moving towards the second argument of the debate. थर्ड तरीका है, there are some that see cruelty on animals करके लिख दो as the main reason. Second, however, there are others who would say that problem is. तो ये 3 तरीके हो गए मेरे लिखने के. Discuss both sides and give your opinion के. अभी हम discuss both sides ही करने वाले हैं क्योंकि मेरा opinion जो है वो end में conclusion में आएगा. मैंने पहले opinion नहीं लिखना अपना, मैं दोनों sides discuss करूंगा. अब बात आती है discuss करना कैसे है. तो हम वापस चलते हैं अपने essay के ऊपर और essay के ऊपर जाके देखते हैं कि किस तरह से हम इसको लिखेंगे. तो पहला मैं ये पार्ट करता हूं, क्रूअल्टी टुवर्ड्स एनिमल्स. तो मैं इसके पॉइंट लिख लेता हूं, क्रूअल्टी टुवर्ड्स एनिमल्स. और सेकंड पार्ट में मैं लिखता हूं ये वाला पार्ट,
और इसके पॉइंट्स में एक पैरा बनेगा ये, दिस विल बी कॉल्ड एज BP1 and this will be called as BP2. Okay, so I have to have points on both. तो मेरे को पॉइंट्स चाहिए दोनों के लिए। मैं दोनों के पॉइंट्स लिख के रखूंगा और दोनों के पॉइंट्स डिस्कस करता हूं आपके साथ। उसके बाद में हम बॉडी पैरा लिखेंगे, आप लोग लिखेंगे और मैं आपके बॉडी पैरास को चेक करूंगा। चलते हैं जी आगे। ओके, क्रूअल। क्रूअल क्यों है, उन्हें बंद क्यों करना चाहिए? नंबर 1, स्मॉल केजेस हैं, एनिमल्स डिस्ट्रेस हो जाते हैं। नंबर 2, अननेचुरल एनवायरनमेंट है। नंबर 3, मोस्ट एनिमल्स आर नॉट एंडेंजर्ड। जो एंडेंजर्ड एनिमल्स होते हैं उन्हें जू में नहीं रखते, उन्हें हम लैब्स में रखते हैं या कहीं और छिपा के रखते हैं ह्यूमन से, ताकि ह्यूमंस उन्हें देख ना सकें। एनिमल्स बिकम पब्लिक स्पेक्टिकल ऑफ एंटरटेनमेंट। तो एनिमल्स जो है वो पब्लिक मजाक बन जाते हैं, बहुत बड़ा मजाक बन जाते हैं फॉर एंटरटेनमेंट। तो ये मेरा पहला पैरा बन गया। अब मैं सेकेंड पैरा चेक करता हूं, सेकेंड पैरा क्या बनेगा। ये मेरा सेकेंड पैरा है जिसमें लिखा है यूजफुल है, प्रोटेक्ट द वाइल्ड एनिमल्स को करते हैं। रिसर्च वर्क टू लर्न मोर अबाउट वाइल्ड एनिमल्स, ब्रीडिंग प्रोग्राम्स फॉर एंडेंजर्ड स्पीशीज, सम स्पीशीज सेव फ्रॉम एक्सटिंक्शन, सीइंग वाइल्ड एनिमल्स क्लोज अप इंस्पायर्स पीपल टू वांट टू हेल्प टू प्रोटेक्ट देम। ठीक है, तो अब आ गया, मेरे दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए कि मैंने ये पैराग्राफ्स में चीजें लिखनी है। अब आपने लिखनी शुरू करनी है चीजें। ठीक है, लिखेंगे कैसे? सबसे पहले BP1 लिखेंगे। लाइंस कौन सी स्टार्ट करनी है? जो 1-1-1 लाइन है, आप कोई भी 1-1 लाइन करके स्टार्ट कर दो और मेरे को BP1 पूरा का पूरा लिख के बताओ। आपने कौन सी फॉर्मेट यूज करनी है? आपने फॉर्मेट यूज करनी है मेन पॉइंट, सपोर्टिंग पॉइंट एंड एग्जाम्पल की, ताकि मेरे को आइडिया हो जाए कि आप कैसे लिख रहे हो मेन पॉइंट, सपोर्टिंग पॉइंट एंड एग्जाम्पल। डोंट वरी, I will check out each and everything that you write down and we will have a public debate on this. All right? जी, Nimarpreet, very good evening. Vishal Sharma, very good evening. Tarunpreet, okay, is ready. All right. Charanjit Kaur लिखती हैं जी, want class on maps on listening module. Can you please arrange as soon as possible? चरणजीत कौर, मैंने अपलोड की हुई है क्लास मैप्स की, प्लीज मेरा प्लेलिस्ट चेक कीजिए, उसमें बनी हुई है क्लास। Virinder Singh, some individuals opine that zoos should be shut down as these are inhuman, whilst others in the favor of preserving wildlife and environment. Virinder, very nice introduction. मेरे को बॉडी पैरा लिख के दिखाओ। Write down the body para using MSE format. M, S and E format लिख के दिखाइए। zoos यूजफुल है कि नहीं यूजफुल है। मैं आपको दोबारा से सारा कुछ इस पे कर देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। जस्ट अ सेकेंड, मैं जो एसे का टॉपिक है ना वो मैं ऊपर ही लिख देता हूं, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड राइट डाउन द टॉपिक। ये क्रूअल क्यों है, ये हम एक साइड लिखेंगे, ये साइड मैंने हटा दी यहां से। डिस्कस वन साइड, ये ओपिनियन लिखना बस, डिस्कस वन व्यू, दैट्स इट। आपने खाली अभी एक व्यू डिस्कस करना है इसमें, और ये आपको मैंने पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो आपने इन पॉइंट्स को लेके एक व्यू डिस्कस करना है। मैं इसको जूम करके बड़ा कर देता हूं, ये आ गया जी। तो आपने सिर्फ इसी पॉइंट के ऊपर मुझे मेन पॉइंट लिख के दिखाना है। ऑन वन साइड से स्टार्ट करके लिख सकते हैं सारे व्यू को, सिर्फ इस पॉइंट को लिखेंगे हम, और हम कोई पॉइंट नहीं लिखेंगे। ये वाला पॉइंट शुड बी शट डाउन। ठीक है, और मैंने आपको यहां पे पॉइंट्स लिख के दिए हुए हैं, इसको फॉर्म करो, पॉइंट फॉर्म करो। ये मैं इसको एग्जाम्पल में ले जाना, शो दिस एज एन एग्जाम्पल, और मेरे को ऐसे का लिख के दिखाइए। ये मेरा पॉइंट आ गया, एनिमल्स डिस्ट्रेस्ड हैं। ये इसके सपोर्टिंग पॉइंट बना दो, सपोर्ट बना दो, ये भी सपोर्ट बना दो, ये इसका मेन पॉइंट बना दो। छोटे छोटे केजेस में रहते हैं, इन ह्यूमंस रहते हैं, तो ये आप मेन पॉइंट बना सकते हैं इसका। ठीक है, तो इसके लिखिए और लिख के मेरे को बताइए चैट बॉक्स में, सो वी विल वर्क ऑन इट। ओके, वी विल वर्क ऑन दैट। Start writing it down, so I'm going to check your work. I know it is going to take a lot of time how to do it,
but do it. Don't worry, it will be very easy. It won't be difficult. Start कीजिए लिखना. Write it down. Please write it down quickly so that I'm able to check it out for you and it becomes very easy for you to handle. Just discuss this one view. That's it. I don't want anything else from you. Okay. So I am going to read it out for you, what you're writing. So Varinder Singh says, on the one hand, trapping the animals in cages increases their distress level among them, and they are kept in unnatural environment away from natural habitat. Moreover, these are not even in the endangered category that need utmost protection from getting extinct. Additionally, it is not a good idea to keep them in a shoe piece for as a showpiece, SHOW Varinder, for the entertainment of the general public by snatching away their freedom. Perfectly fine. So I'm just going to phrase this right for you, and I'm going to write down your only work here. Gurjas Kaur says, to commence with, zoos should be closed. To explain it, people should not keep animal in cages. Wonderful. Gurjas aur likhiye. You're writing it very well. Write down more. Okay, Tarunpreet says, on the one side of the statement, in an unnatural conditions, animals feel distressed when they're kept in cages. Very nice. Kunjmera, very good evening. Right, so write it down. और लिखिए इसमें. So I'm going to write down what Varinder has told me. And we will write that. So let us see what we have to write here. So we will manufacture the whole paragraph here, BP1. So let me write it, BP1. On the one hand, तो मैं वरिंदर का सेम टू सेम कॉपी कर रहा हूं यहाँ पे. मैं इसको ठीक कर दूंगा वरिंदर ने जो लिखा है. I'll make it trapping the animals in cages increases their distress level.
increases the distress level, that is good enough. ठीक है, so मैंने इसको एक लाइन में लिख दिया है ये. ठीक है, they are kept in conditions which do not match their natural habitat. वृंदर मैं आप पे थोड़ा सा additions करी जा रहा हूं. ठीक है, which do not match their natural habitat. Moreover, many of these animals are not even endangered, and थोड़ा साइज छोटा कर लेते हैं because काफी लंबा हो जाएगा. Not even endangered, that need protection from extinct. तो ये देखिए, ये मैंने आपको वीरेंद्र ने जो लिखा है, मैंने उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके आपको बता दिए कनेक्टर्स कैसे लिखने हैं, किस तरह से जोड़ना है इसको, एंड वी आर राइटिंग इट डाउन. Additionally, it is not a good idea to make these animals spectacle for the public as spectacle for public. ठीक है, तो अब मैंने ना ये सारा लिख दिया इसका, बट इसमें एग्जाम्पल नहीं आया. ठीक है, तो मैं इसको एडिशनली को काट के फॉर एग्जाम्पल डाल देता हूं. I would like to cite an example where lions and tigers are caged. ठीक है, so that they are a spectacle for the public. This frustrates these free roaming cats. अब ये cats है ना, बड़ी वाली cats है. This frustrates the free roaming cats, and they start getting depressed. तो अब ये देखो, ये ना मैंने W भी ऐड कर दिया. W मतलब मैंने रैप अप भी कर दिया इसको. तो मैं इनके डिफरेंट कलर्स कर देता हूं आपके लिए, तो आपको समझ में आ जाएगा मेन पॉइंट क्या है, सपोर्टिंग पॉइंट क्या है मेरे, किस तरह से मैंने एग्जाम्पल दिया है. मैंने सारों को अलग अलग कलर कर दिया, एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू हाउ दे आर वर्किंग. ओके, so let me show it to you how they are working. Okay, so I will mark them one by one so that you know how the things work here. Okay, let me take a pen. This is my main point here. ये मैंने वीरेंद्र का कॉपी किया है सेम टू सेम, बट उसमें थोड़ी एडिशंस कर दी हैं ताकि वो जो हमारा IELTS का फॉर्मेट है उसके कंपैटिबल हो जाए. इसमें जो ग्रामेटिकल गलतियां होंगी हम फिर से निकाल देंगे. On the one hand, trapping the animals in cages का C गायब है, in cages increases their distress level. They are kept in conditions which do not match their natural habitat. Moreover, many of these animals are not even endangered that need protection from getting extinct. I would like to cite an example where lions and tigers are caged so that they are spectacle for the public. This frustrates these free roaming cats and they start getting depressed. Okay, now अब मैं आपको एक रूल बता रहा हूं छोटा सा. अब ये वर्ड है caged, यहां वर्ड है cages. Not a very good idea. ठीक है, अब मैं cages की जगह पे ना कोई और वर्ड यूज करता हूं.
तो I'll try to figure out a word instead of a cage, मैं क्या यूज करूं. ठीक है, तो मैं इससे क्लियर करके I'll just write it down in much better language. So देखते हैं क्या निकलती है लैंग्वेज इसकी. Animals in cramped spaces increases the level of distress. So देखते हैं दोबारा से. On the one hand, trapping the animals in cramped spaces increases their distress level. Cramped spaces होते हैं छोटी छोटी जगह के अंदर हम उन्हें फिट कर देते हैं. They are kept in conditions which do not match their natural habitat. Moreover, many of these animals are not even endangered that need protection from getting extinct. I would like to cite an example where lions and tigers are caged so that they are a spectacle for the public. This frustrates these free-roaming cats, and they start getting depressed. So अब ये मेरा पूरा का पूरा बन गया कि zoos को मैंने क्लोज क्यों करना है. ठीक है, एंड लास्ट वाली लाइन में मैंने रैप अप ठीक से नहीं किया. मैं इसको रैपिंग अप दोबारा से आपको करके सिखाता हूं. रैपिंग अप कैसे होती है, ये वो बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है. दिस पर्सन डिप्रेस्ड and start getting depressed. This is the reason why these zoos should be shut. Full stop. तो अब मैंने पूरा का पूरा आपको लिख के दिखा दिया है किस तरह से ये मेरा बना. ठीक है, तो मैं ना इसको यहां से पकड़ के चेक करता हूं और यहाँ पे मैं वर्ड काउंट ऑनलाइन कोई वेबसाइट पकड़ लेता हूँ. वर्ड काउंटर ऑनलाइन की है एंड आई एम गोइंग टू कट एंड कॉपी एंड पेस्ट इट हियर. ओके, so let me see where is it, how do I do it. I copy and paste it so I can come to know word counter, counting words and correct writing. So I just paste it here. So I can see there are 83 words जो कि मेरे को बिल्कुल perfectly fit हुए हैं. 83 words in my essay topic. बहुत बढ़िया इसका पैराग्राफ का स्ट्रक्चर बन गया है ये. तो मैंने अपना हाथ पकड़ के आपकी उंगली पकड़ के आपको सिखा दिया है कि किस तरह से हम ये एक ब्यूटीफुल सा एसे डेवलप कर सकते हैं just based on our formula, based on planning, based on our formula. We can write this lovely essay and this can be written in a beautiful way. So let me see some messages, what the messages are that I have. So Gurjas Kaur लिखती है, to commence with, zoos should be closed to explain people not keeping the animals in cages. Tarunpreet says, on the one side of the statement, in an unnatural conditions, animals feel distressed when they're kept in cages. Kunj Mehra ने लिखा है, good evening ji, very good evening Kunj. Charanjit Kaur says, on the other hand, zoos are cruel and it should be shut down as the cages where these animals are kept are very small in size as compared to the animal size. Very nice, Charanjit. Varinder Singh says, for example, animals are beaten mercilessly in circus. Okay, Varinder, we cannot go to circus because we just have to focus on zoos. Just for the sake of earning a few bucks by some cruel people. Gurjas Kaur says, humans have not the rights to keep animals in zoos because animals in their life, for example, 2 years ago, China government ruled in China would not make zoos. Okay, Gurjas Kaur. So I've written this essay for you and मैंने example भी दे दिया, format भी बता दिया. तो अब हम लिखेंगे second paragraph. ठीक है, तो ये आ गया मेरा second paragraph जिसमें हमने दोनों sides explain करनी है. देखो topic समझो, इसका topic क्या है. टॉपिक कहता है, हम सारा ऐसे ना दोबारा एक बारी पढ़ेंगे, देखेंगे, बहुत मजा आएगा पढ़ के. आप जब कंट्रीब्यूट करते हैं ऐसे में तो इट लुक्स वेरी गुड. Some people think that zoos are cruel and should be closed down. So मैंने इसको पूरा बता दिया, it should be closed down. Others however believe that zoos can be useful in protecting wild animals. ठीक है, अब हम others की साइड पे जा रहे हैं. others की साइड पे, तो others की साइड पे यहां पे हम कोई भी सेकंड लाइन उठा सकते हैं, जैसे कि on the other hand, moving towards the second argument of the debate, ये लाइन ले सकते हैं, या हम ये लाइन दे सकते हैं स्टार्ट करने के लिए. तो मैंने पहली लाइन ये वाली ली थी, ठीक है, सेकंड लाइन ये वाली ली थी.
सेकेंड लाइन अभी लेनी है, मैंने पहले लाइन नहीं ली है, ठीक है। तो आप कोई भी लाइन लिख के लिख सकते हैं। तो एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं इसको। So let us modify it little more. On the one hand की जगह पे मैं यहां से कोई लाइन उठाता हूं, there are some to commence with the first notion। मैं आपको ये भी सिखा देता हूँ कैसे लिखते हैं। To commence with the first notion, some people feel that trapping animals in the cramped spaces increases their distress level। ठीक है, तो मैंने ये आराम से इसको लिख दिया, और इसको भी मैं ब्लू कलर का कर देता हूं, तो ये आपको नजर आ जाएगा इस तरह से लिखा जाता है। To commence with the first notion, some people feel that trapping the animals in cramped spaces increases the distress level। ठीक है, why this use should be shut। तो ये मेरा 83 वर्ड्स नहीं बना, थोड़ा ज्यादा बन जाएगा। अब ये 90 वर्ड्स तक आसपास हो जाएगा, 94 वर्ड्स तक हो जाएंगे, 90 वर्ड्स के लेते हैं इसको। ठीक है, तो ये मेरा पूरा का पूरा, मैं आपको दिखा रहा हूं किस तरह से आप अलग अलग तरीकों से अपने ऐसे टॉपिक को लिख सकते हैं। तो अब ना मैं आप लोगों को बोलूंगा सेकंड पैरा लिखेंगे। हम आप ही के पैराग्राफ्स लेके, आप ही की चीजें लेके मैं इसमें बनाने वाला हूं। Useful, protect the wild animals। Now you people are going to write down on this, okay? So don't worry, I'll keep on correcting it all the time। So I'll give you some time to write down on this। Useful, protect the wild animals। Okay? तो मैं फिर से इसके ऊपर आपको टॉपिक लिख देता हूं ताकि आपको परेशानी ना हो पढ़ने में। Others however feel, तो आपने एक पॉइंट ऑफ व्यू इसका देना है। तो आपने एक व्यू देना है, डिस्कस दिस व्यू। डिस्कस दिस व्यू। तो ये मेरा व्यू आ गया, तो मैं इसको उड़ा देता हूं, इसको ऊपर ले जाता हूं, आप आराम से देखिए। डिस्कस दिस व्यू जी। तो अभी हम इस व्यू के ऊपर चलेंगे। आपने इस व्यू के लिए लाइन लेनी है, एंड यू हैव टू डिस्कस दिस व्यू। ओके, सो राइट इट डाउन एंड आई विल यूज योर essay ओनली। तो आपने इस लाइन को पकड़ना है, ये लाइन को, यूजफुल टू प्रोटेक्ट द एनिमल्स, एंड दिस इज माय टॉपिक, और ये पॉइंट्स है। ठीक है, हम कंक्लूजन नहीं लिखेंगे, डोंट वरी, कंक्लूजन जब बारी आएगी तब लिखेंगे हम। So write down this point, this paragraph, write it down, and I'm going to frame out this paragraph for you. It will be very interesting to frame out another paragraph. So please write it down। Don't worry, we'll combine everything together and we'll see a beautiful essay। बहुत सुंदर essay बनेगा, don't worry। Write it down।
Okay, so now Virinder Singh is writing it down. In addition, on the other hand, on the other side, zoos provide a very safe artificial ecosystem for saving many species from getting extinct, protecting the animals. In addition to that, research work can be carried out to produce various breeds which are on the verge of extinction. Perfectly fine. और नीचे वाला आप एग्जाम्पल करके दे सकते हैं. चलिए अब हमें काफी कुछ मिल गया इसका. तरुणप्रीत जी लिखते हैं, ऑन द अदर हैंड साइंटिस्ट हैव to be research and learn about the endangered species from extinction and their habitats and how they can be protected against their prey. Very well done, Tarunpreet ji. आप भी लिख रहे हैं, so let us start writing it down now. So I am going to write down this essay. Fine. So we will write down the next para and figure it out how to do it. तो इसमें मैं BP2 लिख रहा हूं, BP2. So I am going to write down BP2. On the other side, अब एक साइड तो पहले हमने लिखी थी on one side, फिर आ गया on the other side. ये लिखना शुरू कर दिया. Zoos provide a very safe way, a very safe, जैसे मैंने वीरेंद्र ने लिखा वही लिख देता हूँ, very safe ecosystem to save animals. To save many animals. Animals की जगह पे ना many species डालना अच्छा लग रहा है. Many species. Thank you, Virender. Many species from getting extinct, protecting the animals. Okay. From getting extinct, TINCT, thereby, या therefore, saving, या saving तो पहले word आ चुका है, therefore, protecting, अब इसको वापस रिवाइज कर लेंगे, protecting many animals. काफी हो गया ये. अब नेक्स्ट आ गया, in addition to that, research can be carried out on these animals which are bound to get extinct, okay? Yeah, on the verge of extinction, ये भी ठीक है, which are on the verge of extinction. ये हो गया जी. अब हम एग्जाम्पल देंगे इसके आगे एक और. हम देखते हैं कौन सा एग्जाम्पल है. तो हम लिखते हैं, apart from that, these animals can act as motivators for the public to see them every day. They can be because empathy का मतलब है feelings जगाती हैं. They can be the cause of empathy they can be the cause of empathy in the eyes of a common man. Therefore word मैंने पहले यूज कर दिया है. Thus, the zoos have a major role to play in saving the animals, in saving the fauna, saving the animals from getting extinct and arousing
awareness amongst masses. So ये मेरा एक और पैरा जी कंप्लीट हो गया। तो अब इसके मार्क करते हैं। On the other side, zoos provide a very safe ecosystem, thereby protecting many animals from getting extinct. ये ना यहाँ पे रोक देता हूँ, thereby protecting many animals। मैंने बड़ी जगह लिख दी है, काफी है। और मैं इसको ना साथ साथ में वेरीफाई करी जा रहा हूँ ताकि कोई गड़बड़ ना रह जाए। ये मेरी सपोर्टिंग पॉइंट आ गए दो, रेड में मार्क कर दिए मैंने इनको। They can be the cause of empathy in the eyes of a common man. तो ये इसमें मैंने एग्जाम्पल नहीं दिया, तो मैं यहाँ एग्जाम्पल दे देता हूँ एक। मैं एग्जाम्पल का कलर चेंज करके डार्क ग्रीन कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने पीछे एग्जाम्पल लिखा था आई वुड लाइक टू साइट एन एग्जाम्पल, तो यहाँ मैं फॉर एग्जाम्पल लिख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल की जगह इंस्टेंस लिख देता हूँ। फॉर इंस्टेंस लायंस, लायंस एंड टाइगर्स का पहले हो चुका है, ठीक है। डॉल्फिन्स, DOLPHINS, dolphins can be the cause of empathy in the eyes of common man. In the eyes of common man, the condition of dolphins, the condition and the love for dolphins, can be the cause of empathy in the eyes of common man. तो ये मेरा ना, इसको मैंने ग्रीन कलर का कर दिया। जूज में डॉल्फिन्स होती हैं, डॉल्फिन्स को देख के बहुत लोग उनको बहुत मजा आता है डॉल्फिन्स को देख के। Thus zoos can have a major role playing the and arousing awareness amongst the masses। तो ये मेरा लास्ट में आ गया जी, ये कवर हो गया। तो अब मैंने इसमें फिर से वही फॉर्मूला यूज किया ऑन द अदर साइड। अब ऑन द अदर साइड के लिए ना मैं और वर्ड उठा लेता हूँ यहाँ से। तो मेरे को मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड आर्ग्यूमेंट ऑफ द डिबेट, तो ये मैं ले लेता हूँ, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड आर्ग्यूमेंट ऑफ द डिबेट, तो यहाँ ये पकड़ा और इसको मैंने ब्लू कलर का कर दिया। सॉरी दोनों सेम लगते हैं, सो आई विल चेंज इट टू ब्लू कलर। देखते हैं जी क्या बना। Moving towards the second argument of the debate, zoos provide a very safe ecosystem to save many species from getting extinct. In addition to that, research can be carried out on these animals which are on the verge of extinction. Apart from that, these animals can act as motivator for the public to see them every day. For instance, the love for dolphins can be the cause of empathy in the eyes of a common man. Thus, the zoos have a major role to play in saving the animals from getting extinct and arousing awareness among the masses. तो ये मेरा एक और पैरा तैयार हो गया, बहुत बढ़िया। तो अब ना मैं इस पैरा के भी वर्ड काउंट करता हूं और देखता हूं कि ये मेरे कितने वर्ड आ गए यहाँ पे। 97 वर्ड्स तैयार हैं जी मेरे पूरे। 97 वर्ड्स ये तैयार हो गए। और मैं पहले वाले पैराग्राफ के भी एक बार वर्ड्स काउंट कर दूं, ये कितने वर्ड्स हैं ये भी देख लेते हैं। ये मेरे आ गए जी 89 वर्ड्स। तो बड़ा अच्छा हमने बना दिया है, 89 वर्ड्स ये आ गए। और मेरी इंट्रोडक्शन यहाँ बनी पड़ी है। ये मैंने बनाई थी पैराफ्रेजिंग, मैं इसका कलर कर देता हूँ रेड, और साथ में ये था मेरा थीसिस, इसको मैंने कर दिया ब्लू। तो इसके भी मैं वर्ड काउंट्स कर देता हूँ और आपको बता देता हूँ कि भाई हम यहाँ जा रहे हैं, ये हमारा हो रहा है 54 वर्ड्स। तो बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही लाइन में हमारा ऐसे बना रहा है। आप सब लोगों ने इकट्ठा मेहनत करा तभी ऐसे बन गया हमारा पूरा। तो अब ना मैं क्या करता हूँ कि ना तीनों को एक बारी पढ़ के देख लेते हैं ऐसे की लुक कैसे आएगी, ठीक है। तो सब मैं इधर वास्ते हटावा देता हूँ। तो अब मैं इसको पढ़ के देखता हूँ पूरा ऐसे को। टॉपिक भी पढ़ लेते हैं एक बारी साथ में, तो देखेंगे कि हमारे पूरे घंटे की मेहनत क्या रंग लेके आई है हमारा।
Some people think that zoos are cruel and should be closed down. Others, however, feel that zoos can be useful in protecting wild animals. Discuss both views and give your opinion. There's a section of people who argue that zoos help to preserve wild creatures, while others are against them and say that they are inhumane and should be shut. I believe that animals are kept in poor conditions, which take away the right to live freely, making the existence of zoos unacceptable. ये मेरा व्यू है, जो हम सीखेंगे कंक्लूजन में कैसे लिखना है, वो कल की बारी आएगी, आज नहीं. पहला पैरा. To commence with the first notion, some people feel that trapping the animals in cramped spaces increases their distress level. They are kept in conditions which do not match their natural habitat. Moreover, many of these animals are not even endangered that need protection from getting extinct. I would like to cite an example where lions and tigers are caged so that they are a spectacle for the public. This frustrates these free-roaming cats and they start getting depressed. This is a reason why zoos should be shut. 89 words. Agla para. Moving towards the second argument of the debate, zoos provide a very safe ecosystem to save many species from getting extinct. In addition to that, research can be carried out on these animals which are on the verge of extinction. Apart from that, these animals can act as motivator for the public who see them every day. For instance, the love for dolphins can be the cause of empathy in the eyes of a common man. Thus, the zoos have a major role to play in saving the animals from getting extinct and arousing awareness amongst the masses. तो ये मेरे 97 वर्ड्स तैयार हो गए. अब अगर मैं टोटल करके देखूं मेरे कितने वर्ड्स बनते हैं, तो मेरे बहुत अच्छे वर्ड्स बन चुके हुए हैं पहले ही. तो मेरे पास पहले वर्ड्स आए 54, प्लस मेरे पास वर्ड्स आए 89, प्लस मेरे पास वर्ड्स आए 97. तो मेरे 240 वर्ड्स तैयार हो चुके हैं. अब अगर मैं 40 वर्ड का अपना कंक्लूजन लिखूं तो मेरा बहुत ज्यादा ऐसे इंप्रेसिव और लुक बहुत ही बढ़िया आ जाएगी. तो ये सब आप लोगों ने कलेक्टिव एफर्ट डाल के लिखा है, तो ऐसे की शक्ल देखो कैसी बन गई है. मैं क्या कर रहा हूं, खाली आप लोगों के आइडियाज कनेक्ट करके बना रहा हूं टोटल. तो देखते हैं आप लोगों ने क्या क्या कमेंट्स लिखे हैं इसके अंदर. अभी गुरजस कौर से सर BP2 के लिए कनेक्टर एंड एक्सप्लेन एग्जाम्पल के लिए क्या यूज करते हैं. गुरजस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया मैं क्या क्या लिख रहा हूं इसके अंदर. गुरजस कौर सर एग्जाम में भी एग्जामिनर इसी ही वर्ड काउंटर करके बैंड देते हैं. गुरजस ये हमने इलेक्ट्रॉनिकली काम कर रहे हैं तभी हम ऐसा कर रहे हैं. जो CD IELTS होता है उसके अंदर वर्ड काउंटर पहले ही लगा होता है, तो आपको साफ वर्ड काउंटर नीचे नजर आते हैं. बट जो मैनुअल होते हैं जो पेपर पे होता है उसके इंडिविजुअल वर्ड काउंट्स किए जाते हैं और चेक किया जाता है कैसे बना हुआ है ऐसे, तो वर्ड काउंट वैसे होते हैं. ठीक है, तो हम आज का रिकैप करेंगे सारे का हमने क्या किया. तो देखते हैं आज हमने क्या सीखा. आज का लेसन काफी लंबा था, तो क्योंकि दो चीजें मैंने कवर करी हैं आज, सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू. व्हाट इज इट? First of all, I started telling you introduction, what is the hook line, and then in the body we had a discussion essay, just the body of the discussion essay we discussed. I told you to follow us on social media, Webberz Educomplimited, to check our blog, see the Instagram, and that's the WhatsApp number in case you wish to join. Writing band score is like this: that task 1 is for 3 bands and task 2 is for 6 bands. You should always do the essay first. Parts of the essay are introduction, body, and conclusion, and the word limit should be 250 to 280 words. Now, if I talk about the essay introduction, before writing the introduction, you should always make it sure to read the statement very carefully, underline the keywords, understand the central idea, and plan of action should be there, and then overview should be given, not before that. So then introduction of HPT, hook line, paraphrase and thesis. ये क्या होते हैं? Hook line is the line which is a hook, मतलब hook करती है आपके रीडर को, बट ये एक जरूरी लाइन नहीं है. मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करता इसको यूज करने के लिए. कुछ लोग कहते हैं यूज करो, इसके लिए मैंने लेक्चर स्पेशली बनाया आपको बताने के लिए इसके फायदे और नुकसान क्या हैं. अगर जरूरत हो तब हुक लाइन यूज करनी है, वरना इसको टच भी नहीं करना आपने. ठीक है. पैराफ्रेज क्या होता है? पैराफ्रेज अपने शब्दों में समझाना होता है टॉपिक को. व्हाट इज थीसिस? थीसिस इज द स्टैंड पॉइंट, योर व्यू पॉइंट ऑफ द एसे टॉपिक व्हिच यू हैव टू राइट. What is a hook line? Let us develop one hook line. This is the topic that we discussed, and we wrote a one hook line based on this. It was 78 word. That became very long, very long. So that is the reason I don't recommend hook line to people.
Then we learnt about misconception of hook line, that it gets more bands. It is a wrong thing. It is not even marked, so don't worry. Essay body. Essay body consists of intro and body. Conclusion हम बाद में करेंगे, अभी मैंने बताया नहीं conclusion के बारे में. PNT, P stands for paraphrase, T stands for thesis. MSEW means main point, supporting point, example and wrap up. तो मैंने पहले आपको बताया कि पहले अंडरस्टैंड करते हैं एसे में क्या मार्क होता है. उसमें लिखा होता है गिव रीजंस फॉर योर आंसर एंड इंक्लूड एनी रेलेवेंट एग्जांपल्स फ्रॉम योर नॉलेज और एक्सपीरियंस. एंड दिस इज व्हाट वी डिड टुडे. हमने इसी के बेस पे अपनी सारी बॉडी डिजाइन करी है. Design it according to the overview, follow the proper format of the essay, put one or two supporting arguments and one example in one para. Connectors करने बहुत जरूरी होते हैं. बॉडी में मेन पॉइंट आता है, सपोर्टिंग पॉइंट आता है, आर्ग एग्जाम्पल आता है, रैप अप आर्ग आती है. MSEW फॉर्मेट इसे बोला जाता है. 80 to 100 वर्ड्स के 2 पैरे बनते हैं. अगर 3 पैरे बनेंगे तो 60 to 70 वर्ड्स के बनेंगे. We will follow MSEW फॉर्मेट और MSE फॉर्मेट इसे बोलते हैं. So we'll follow this format for discussion essay. मैंने कुछ सेंटेंसेस दिए आपको, हम इनसे स्टार्ट कर सकते हैं. फिर मैंने आपको बताया कि जूस के बारे में हमने ऐसे लिखना है, कैसे लिखेंगे. ये मेरा ऐसे टॉपिक था. इंट्रोडक्शन लिखी उसके बारे में, BP1 लिखा और BP2 लिखा. ये सारा कुछ आप लोगों ने ही लिखा है. I just collected ideas from you and wrote it down here. So with this we come to the end of our session today, and I hope that it was pretty useful essay body writing session for discussion. Tomorrow we'll do another kind of body writing that will be based on do you agree or disagree. जो इंपॉर्टेंट टाइप्स है मैंने आपको सारी करवा देनी है ताकि आपको कभी भी प्रॉब्लम ना आए लिखने के अंदर. ओके, थैंक यू सो मच, गुड नाइट. एक टॉपिक रह गया छोटा सा. राचीना सेज सर डेली लाइव क्लास देते हैं और किस टाइम पे शुरू होता है. राचीना, इट इज एवरी डे एट 10 PM इंडियन टाइम, 10 PM. थैंक यू सो मच.